Union Health Minister Mansukh Mandaviya on Thursday said the centre is keeping a close eye on new COVID-19 variants. This is amid massive surge in infections in China. Speaking in both the houses of parliament, the minister said that the states have been asked to step up the genome sequencing and they should impose masking norms. Now, nothing that the COVID-19 virus is constantly evolving. Mandaviya said the health ministry is proactive in managing the pandemic and has provided financial assistance to the states in their fight against the contagious virus. Let's listen into what the health minister had to say. सर, वैश्विक कोविड महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नज़र रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत All right, so that was the health minister at the Lok Sabha. Now, I still have both the doctors with me on the broadcast. I would like to come to Dr. Gilada now. Dr. Gilada, as we were discussing, you were telling that Chinese have low immunity. So do you think that this whole situation of Chinese having low immunity and their vaccine not being that effective as of that being used in India, do you think that it has some relation with the zero COVID policy that China has approached towards COVID? Yeah, China has faltered in two places. One is zero COVID policy, and second is their faith in their own vaccine. And both are failed. Sinovac, I don't know why WHO gave permission in the first place. That time the efficacy rate was found to be 50.01%. So usually below 50 they don't get clearance, above 50 they get the clearance. And I was doubting since beginning that 50.1 is so thin margin that it is manipulated margin. And they gave permission that is world's first anti-COVID vaccine. And after that it was found all over the world that Sinovac is useless. So despite our bad relationship with China, despite China is trying to have any kind of military invasion in India, we would like to still help China if China asks the help with two things. One is COVID management policy and second is vaccine. We can provide them as many number of vaccines they require. At least our vaccines are effective. The second important thing about our vaccine is mRNA vaccine has a life of 4 to 5 months. Our vaccine has a life of 10 to 12 months. So therefore in the countries where mRNA is used, they have given 4th dose, 5th dose. We have not even given 3rd dose. And other most important thing, what health minister has been emphasizing is precaution dose. Yes, it is important that people who are at risk, they should have taken the precaution dose and everybody should have taken. But what has happened, our precaution dose policy was little bit delayed. Initially they said that it is only for 60 plus population. Then they opened up when a lot of vaccines were available. And our people's psyche is such that when COVID is lying low, when deaths are low, they do not take the vaccine. And I have been telling that you open up the vaccine, don't put a ration on vaccine, keep it available at chemist shop, keep it available at every doctor. If I have been and Dr. Chawla has been able to give typhoid vaccine, pneumovac vaccine, hepatitis B vaccine, why will not be able to give COVID vaccine? But it is not available openly. And people have a hesitancy to go to centers now because the COVID is lying low. So when patients come to us, we ask them, did you take 3rd dose? No. Have you got it, sir? I don't have it. So if I had, I could have provided to them. And now in COVID, nobody is going to make money. It is going to be basically, everybody knows the cost of the vaccine is around 200, 300 rupees. Doctor cost maybe about 100, 150. So it is not going to cost more than 400, 500. But if a person goes to the vaccination center, that person loses his day of work. And lastly, most important is that all those people which are vulnerable, which are above 60, which are having some comorbidities, they are always in touch with some doctor. So tell that doctor to provide him vaccine and make that vaccine available with the doctor. We do not expect those people to go to vaccination center. They are not now, they are far and less in between. So we are not expecting them to go to vaccination center. And I don't think beyond that anything is required. Yes, okay, those who want to use mask, fine. I don't think we should ban our social gatherings or travel or anything. And
travel doesn't matter because the variants are not made in particular one place. They are in several places together. Delta, during Delta time, Delta was made in India or was variant originated in India. But it reached 150 countries when there was a total lockdown everywhere. So that means Delta was going on everywhere also. It's not only in India. So therefore, we should not be bothered about what is happening in China and what is happening in the West. In the West, there are several countries, including US and Brazil. They are having COVID problems since beginning, and it is going on like 40,000, 50,000, 10,000, 20,000 cases. So they are not bothered. Yes, yet people have traveled, come back, nothing has happened. So that way, Indians have gained good immunity, both out of natural infection and out of vaccine. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.